Delhi, a city of more than 11 million people, living their worst nightmare. Under siege by a new wave of the coronavirus, it's a capital where people are carrying their loved ones to hospitals, crematoriums, and graveyards. On every road and almost every hour, dozens of ambulances make their way to the city's biggest hospitals. But in most cases, only to be disappointed. Outside the Lok Nayak Hospital, patients are being turned away. The hospital doesn't have any beds, says the security at the gate to a man who is carrying a patient he says is critical. Where do I go? He asks. Moments later, another ambulance arrives. Narendra Singh is here with his father Rajendra, who needs oxygen. But he too is denied entry at the hospital. लोग यहाँ पर एक आया हॉस्पिटल है, मैं वहाँ पे गया, वो भी यही कह रहे हैं हमारे बेड तो हैं लेकिन लोक नायक वाले जब तक रेफ़र नहीं करेंगे हम नहीं लेंगे। तो मैं भी दोबारा से हॉस्पिटल के अंदर गया था तो वहाँ पर उन्होंने मना कर दिया लेने से, कह रहा हमारे यहाँ बेड फुल है, हम नहीं लेंगे। Not knowing what to do anymore, Narendra has to leave the ambulance. Him and his brother walk next to their ailing father, making their way to a sidewalk. Now, the long wait, deciding what to do next. One of the biggest issues in this crisis is getting an oxygen supply for patients. Outside an oxygen manufacturer plant, people are standing in queues with their own cylinders. And it's not just them, even the hospitals have their ambulances parked for hours, waiting to get their cylinders refilled. से 2 बजे से खड़े हुए, अभी 2 बजने वाले हैं थोड़ी देर में। अभी तक ऑक्सीजन में 2 पेशेंट मर चुके हैं आरोग्य हॉस्पिटल में। वहाँ से प्रेशर आ रहा है बार-बार। अब हम क्या करें, ना यहाँ मिल रही, अब दूसरों की गाड़ी बिना नंबर के भरे, दूसरे नंबर की गाड़ी अभी तक नहीं भरी गई है। A notice outside the plant reads a priority list for supply. The people who have brought their own cylinders for their patients back home are at the bottom of this list. Sometime later, police officials arrive and demand the people empty the inner area of the plant in order to maintain social distancing. The queues are disrupted. People file out, rolling their cylinders with them. The supply process, however, begins. But it's been nearly 24 hours. Not everyone in this queue will get to provide for their ailing patient back home. Meanwhile, the city's crematoriums and graveyards are piling up. At the Ahle-Islam graveyard, a family prays by the grave of a loved one. None of them in a state to talk. The graveyard's caretaker Shamim says the place won't be able to take any more bodies if the numbers continue to grow. दिल्ली से 15 से 20 डेड बॉडियाँ लगातार हमारे कब्रिस्तान में पहुंच रही हैं। उसकी वजह से हमारा जो कोविड ब्लॉक है वो तकरीबन ख़त्म ही हो चुका है और उसकी वजह से हमें काफ़ी दिक्कत आ रही है और हमने अपनी कमेटी से बोला है और हमारी कमेटी ने आगे भी बोला है जगह के लिए, लेकिन जगह की अभी तक कोई डिसाइड नहीं हुआ है, तो अभी तक हम उसी में एडजस्ट कर पा रहे हैं और काफ़ी मैयतों को हमें डाइवर्ट करना पड़ रहा है। Elsewhere, at a crematorium in Delhi, families mourn their dead. Nearly 80 bodies have arrived here today at the Simapuri crematorium site. And it's only 5 in the evening. More bodies are expected to come, a worker here tells me. Families lighting the pyres, plunged in a state of shock. Some use their phones to show the funerals taking place so that people back home can watch the last rites. Jitendra Singh, who supervises the cremations here, says the events have broken him.
जब मैं छोटे छोटे बच्चों को देखता हूँ, महिलाओं को देखता हूँ और परिवार के परिवार पूरे, कभी अभी परसों पहले बेटे का डेथ हुआ, फिर उनकी मदर का भी हो गया और दिल टूट जाता है। मैं सच्ची बोलूँ, मैं देखता हूँ तो अभी एक माता जी आए थे तो बाहर रो रहे थे, कहने लगे कि बेटा मैं विधवा हो गई थी, मेरा पति मर गया 15 दिन पहले और आज मेरा इकलौता बेटा था जो मेरे पति का रूप भी अदा कर रहा था और बेटे का भी, आज मेरा बेटा भी मर गया कोरोना से। कहने लगी मैं दूसरी बार विधवा हो गई हूँ। मुझे लगता है बहुत गलत हुआ, जुल्म हुआ है लोगों के साथ, किसी ने बचाया नहीं, सबकी तरफ लोगों ने देखा भारी मन से, किसी ने बचाने का प्रयास नहीं किया, किसी ने आसरा नहीं दिया। कुल मिला के बहुत 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 कठिन दौर रहा दिल्ली वालों के लिए। अभी चलेगा और मुझे लगता है और पीक पे जाएगा अभी। There is a sense of despair in the city, a sorrow pressing down on a country where people are trying desperately to survive a vicious crisis. A crisis which the government had more than a year to prevent. To receive instant updates on all videos from The Wire, click the subscribe button and hit the bell icon. Pay to support independent journalism. Click the link in the description and choose the amount you want to pay.